सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं। कुछ CMMI के तरीक़ पे जाते हैं, कुछ ISO के ज़रिया अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और ये एक ऑन गोइंग और समटाइम्स वेरी पेनफुल एक्सरसाइज और रूटीन, बल्कि कहना चाहिए कि इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर डूइंग बिजनेस बन जाती है ऐसी एक्टिविटी। तो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें सक्सेस वेरी करती है। अगर आप हिस्टोरिकली प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की जो CMM के हवाले से एक्टिविटीज़ थी, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने शुरू में ही CMM को अडॉप्ट कर लिया था और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको इंस्टीट्यूट करके प्रोग्राम्स शुरू किए थे प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के, दे हैड डिफ़िकल्टी इन अचीविंग फॉर एग्ज़ाम्पल CMM लेवल 2, जबकि जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने थोड़ा ठहर कर इस मॉडल को मैच्योर होने के बाद इसको अडॉप्ट किया था, दे वर मच मोर सक्सेसफुल by the fact that they were able to achieve, for example, level 2 a lot quicker as compared to the companies which really started early on. तो इस तरह की बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जिनसे हमारी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की एक्टिविटीज़ की जो सक्सेस रेट है that changes and that is different from each company to another. अगर आप थोड़ा सा कार ओनरशिप में या मोटर बाइक्स में या ट्रक्स में या किसी और ऑटो इंडस्ट्री से फेमिलियर हैं, तो वहाँ एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं माइलेज, कॉन्सेप्ट ऑफ माइलेज। तो हर कार का, हर मॉडल का जो माइलेज है वो वेरी करती है from model to model, from car to car, from where it's driven। अगर हाईवेज़ पे कार चलाएं तो उसमें बेहतर माइलेज मिलती है, अगर सिटी के अंदर चलाएं तो उससे ख़राब माइलेज मिलती है या कम माइलेज मिलती है। यही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस टर्मिनोलॉजी को अप्लाई करें सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में, तो बाज़ पैरेलल्स हमें नज़र आ सकते हैं। हम यहाँ पे आसानी से कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में भी माइलेज जो है वो वेरी करती है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, एंड देयर आर ए नंबर ऑफ फैक्टर्स जो इस माइलेज को वेरी करने में उनका अमल दखल है या वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ हम पेट्रोल या डीजल की माइलेज की बात नहीं करते, बल्कि हम बात करते हैं सक्सेस रेट की। तो अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के हवाले से देखें तो हम माइलेज को सक्सेस रेट के इक्विवेलेंट करार दे सकते हैं, और ये एक बोरोड टर्मिनोलॉजी है जिसकी मदद से, जो कि वेल अंडरस्टूड टर्मिनोलॉजी है और किसी मुश्किल के बग़ैर आप इसको समझ सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो उन फैक्टर्स को देखेंगे कि क्या वजह है कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में मुख्तलिफ़ जो सक्सेस है या मुख्तलिफ़ माइलेज मिलती हैं हमें एज़ फार एज़ सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ and initiatives are concerned. इसमें बहुत सारे factors हैं, obviously will not be able to cover all of them, but this discussion would set you in a good grounding as far as determining additional factors or understanding what factors are influencing the process improvement activity. Similarly, आपको बहुत सारी और नए avenues मिल सकते हैं जिनके ऊपर आप research कर सकते हैं, जिनको आप investigate कर सकते हैं कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, उनमें जो सक्सेस रेट है वो वेरी करता है। या हमारी आज की बोरोड टर्मिनोलॉजी के मुताबिक वो माइलेज है वो वेरी करती है। सबसे पहली जो आज हम डिस्कशन करेंगे बिफोर वी टॉक अबाउट
those factors which are contributing in the success or failure of process improvement activities. हम ये देखना चाहते हैं कि एक जो software process improvement है, that itself is a spiral model, और it is a continuous non-ending journey, जिसके ऊपर आप एक दफ़ा शुरू हो जाएं तो फिर आपको depending on your business goals, depending on your core competencies, depending on your workforce competencies, depending on your business objectives, आप जहाँ तक जाना चाहें जा सकते हैं. So this is basically a road to improvement. लेकिन ये भी जहन में रहना चाहिए कि अगर आप प्रॉपरली सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ को, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स को और सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के टोटल पैराडाइम को फॉलो नहीं करते, विच मीन्स कि यू नीड टू हैव कमिटमेंट, यू नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज, यू नीड टू बी सीरियस अबाउट इट, यू हैव टू हैव मेजरमेंट प्रोग्राम्स एंड सो फोर्थ. तो बहुत सारी बातें जो कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, अगर आप उनको फुलफिल नहीं करते तो दिस जर्नी विल नॉट only be an unending journey, but in fact it would be a road to nowhere, which we don't want. But I'm just warning you. So while each software improvement, process improvement can be viewed as a tactical project, you must follow through with others to remain competitive. ये भी बड़ी important बात है. Not only this is tactical, but this is also strategic. You are not in the business just to improve your software processes. You're in the business to produce high quality and high quality software products, or to provide high quality software services. You are in the business to make money for your shareholders, for your employees, for your organization. And so you have to be economically viable, and you have to make the software process improvement program economically viable as well. So this process, the software process improvement initiative, has its tactical issues as well as, obviously, this is a strategic issues. So इससे पहले कि हम उन factors को, उन mileage improving areas को discuss करें, let's look at the spiral model for software process improvement adoptions. इस वक्त आप स्क्रीन पर वो process improvement adoption model देख रहे हैं, जो कि एक spiral की शक्ल में है, और दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट साइकिल एंड स्पाइरल मॉडल. और इसको आपको देख के PDCA याद आ जाना चाहिए, विच इज प्लान, डू, चेक एंड एक्ट. एंड दिस मॉडल इज ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल which starts you from the very humble beginnings of process improvement and takes you to the optimizing activities which are related to software process improvement. इस मॉडल को you have seen this before, and इसको आप अपने जहन में लेके आए, रिफ्रेश करें PDCA मॉडल के हवाले से, and then we'll take this model and we'll talk about it further. अब अगर आप इस मॉडल को जहन में रखते हैं, क्योंकि दिस स्पाइरल मॉडल चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हों या प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की अडॉप्शन के हों, ये बात जहन में रखें कि ये स्पाइरल्स को आप अनरैप कर सकते हैं. जब आप सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की स्पाइरल मॉडल को अनरैप करते हैं, तो दिस आल्सो gives us, or is converted into a shape or a figure or a visual, which I'm going to show you now, and then we'll talk about it. This visual is titled Software Improvement Journey, and our objective is to complete this journey according to the goals, the objectives that we have set for our organization. तो सबसे पहले आपको जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो करंट स्टेट है. यू नीड टू नो योर करंट स्टेट, और उस करंट स्टेट में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के रोड ब्लॉक्स और इश्यूज और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा. उस करंट स्टेट से आप एक फ्यूचर डिज़ायर्ड स्टेट में जाना चाहते हैं. उस करंट स्टेट से आपको फ्यूचर डिज़ायर्ड स्टेट में जाने के लिए ऑब्वियसली सॉल्यूशंस डेवलप करने पड़ेंगे, लेकिन उस करंट स्टेट
से मूव करने के लिए टुवर्ड्स द फ्यूचर डिजायर्ड स्टेट, आपको सबसे पहले अपने करंट स्टेट की रोड ब्लॉक्स, इश्यूज, चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर उनका एक सोल्यूशन बनाना पड़ेगा और उन सॉल्यूशंस को या जो सॉल्यूशन आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के बाद आप एक इंटरमीडिएट स्टेज के ऊपर आएंगे और उस इंटरमीडिएट स्टेज पे आप थोड़ी देर ठहर के अपने आप को एवेल्युएट करेंगे एंड देन यू विल मूव ऑन टू द फ्यूचर डिजायर्ड स्टेट। एंड नाउ दिस इज बेसिकली a never-ending journey because you would not want to stop at any intermediate state until you hit what you have set for yourself as a goal, which is the desired state. ये desired state कंपनी A के लिए मुख्तलिफ हो सकती है कंपनी B से, कंपनी C के लिए मुख्तलिफ हो सकती है कंपनीज A और B के लिए, और कंपनी Y के लिए तमाम बाकी कंपनियों से मुख्तलिफ हो सकती है। ये फ्यूचर डिजायर्ड स्टेट जो है ये this future desired state is driven by the objectives of that company, the business objectives, the economic objectives, the objectives with respect to the human resources, growth के लिहाज से, और बहुत सारे factors हैं which obviously we are not going to go into much detail here. इस वक्त हम सिर्फ इस journey के बारे में discuss कर रहे हैं। फिर आप एक desired state को जब achieve कर लेते हैं, you may want to set another future desired state, and then you will be running this, or you will be carrying on to this, or you will starting new journey, so to speak, to reach to that future desired state. Over simplistically यही वो steps हैं जो आपको लेने पड़ते हैं और ये आपको लेंगे। अब हम इस visual को एक दफ़ा दोबारा से मैं describe करना चाहता हूँ ताकि आपके जहन में अच्छी तरह आ जाए, क्योंकि this is what the software process improvement journey really is. Basically, we first have to recognize that where we are standing, that would be our current state. So we start moving toward a desired future state from that current state. Almost always we encounter roadblocks, we encounter issues, we encounter challenges, and they can come from all sorts of corners. They can come from your people, they can come from some parts of your management, they can even come from some part of your stakeholders. They will certainly come from technology, they will come from methodologies, they will come from processes, they will come from tools that you're already using. However, gradually we will move towards the solution. We will start to develop solution. We'll start to develop, convince people that this process improvement initiative, that this process improvement activity, this process improvement program is for common good of the organization, of the people, of the economic and professional and technical growth of all involved. So in that you would go to what is known as the intermediate state, which represents some acknowledged success. I'm not saying कि यहाँ आप सब कुछ कर चुके होंगे, no, but you have achieved something. Once you have achieved something, and once you have shown that the investment that was made to go from or improve from a current state to an improved state to an intermediate state which is better than the previous current state, then your barriers will start to fall. Then your challenges will start to become less difficult, and your issues will be resolving and the roadblocks will be removed. However, do not let this be your final desired state. You are going to continue to move and march forward towards your desired future desired state. So you would have to make more effort, more progress, and in the meantime you will see some other challenges will creep up. Some other people will say, aha, we don't want to do this. But continue to work on the intermediate, continue to march forward in the direction of the future desired state with commitment, with energy, and with zeal that is necessary for
for this project, for this sort of activity, which is process improvement. Improvement is very difficult. To change the way we do things is very difficult. First of all, you have to realize that you need to improve, and that is sometimes a very, you can call it a rude awakening that, I have faults, my company has faults, my project management has faults, or my project team has faults, and that in and of itself is going to initiate you, is going to propel you to start making the improvements that are necessary for you as an individual, as a professional, as a team, as an organization, and overall as an industry. So if you compare this visual that you have just seen with the one that I had shown you earlier about the spiral process improvement model, you can think of these spiral loops as the intermediate state. So ultimately you will reach the desired state, the future desired state, but you have to go through the spiral loops, and you have to stay within the domain of what you call intermediate states, and each intermediate state will be better in terms of process improvements and so forth, and it will be closer to your desired future state. So having said that, let's now start talking about the factors which influence in improving the software process activities. इसमें यह है कि बाज़ फैक्टर्स ऐसे होते हैं या बाज़ एरियाज ऐसे होते हैं कि अगर उनके ऊपर आप फोकस करें तो आपकी सक्सेस ज़्यादा अच्छी हो सकती है, सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छा हो सकता है, या जो आज टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट के हवाले से कि हमारी माइलेज जो है वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है. उसमें से एक बहुत की एरिया ये है कि यू नीड टू डिफाइन योर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम कहना चाहिए या प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव कहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक फ्यूचर. इस लिहाज से योर स्टार्टिंग पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है दैट इज़ नॉट योर करंट स्टेट. स्टार्टिंग पॉइंट इज़ टू डिटर्मिन वेयर is it that you want to go? What is your strategic future? Because starting point represents your organization's strategic future, so that the first way is the first way to improve your mileage, improve your chances for and speed of success, is to define your strategic future very, very clearly, very, very clearly. The most second definition of a future desired state is a vision. First of all, you need to have a vision. You can only start your software process improvement initiatives or programs in more concrete terms only after you have a vision to start such a program. You have developed or you have felt a need to initiate such a program. So you need to have a vision. Vision is very important. So one of the most foremost concepts or factors which can improve our mileage in software process improvement and in improving the success rate of software process improvement is shown next. You need to understand the business needs well. ये एक ऐसी बात है कि जिसके ऊपर यूजुअली मुझे मैनेजमेंट को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, या मैनेजर्स को बताने की ज़रूरत नहीं, बट टेक्निकल पीपल also need to understand their business needs well. A process that adds structure and commitment to your organization's vision is the core competency planning process, which this means is that हर बिजनेस के कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं और टिपिकली ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को जानती हैं, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट जो आपकी विजन है, ऑर्गेनाइजेशन विजन है, उसको जो कोर कॉम्पिटेंसी है उसकी प्लानिंग के साथ एसोशिएट किया जाए, उसको स्ट्रक्चर किया जाए. Its major contribution is that it elevates the process improvement thinking to a strategic level. जो आपकी process improvement की program है, initiative है, thinking है,
उसको आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ अटैच कर देना है, उसके साथ उसको एसोसिएट कर देना है. दैट इज़ very important. What this enables you to do is that it gives management, it gives technical people, it gives all the stakeholders of that organization to think strategically in terms of process improvement. It also expands top management's competitive view from the traditional product focus to include key abilities, that is key skills the organization needs to create those products. तो ना सिर्फ ये कि आपने प्रोडक्ट्स बनानी है, बल्कि उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आपकी रिसोर्सेज के पास जो को कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, वो उनके बारे में भी सोचना ज़रूरी होता है. आइडियली द कोर्स कॉम्पिटेंसी प्लानिंग प्रोसेस इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज योर बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस. यानी कि ना सिर्फ ये कि आपने जो इकोनॉमिक साइड है उसको देखना है, बल्कि उन इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ, उन प्रॉफिट मेकिंग आइडियाज़ और प्रॉफिट मेकिंग थिंकिंग के साथ आपने अपने वर्क फोर्स की और अपने बिजनेस के लिए जो कोर कॉम्पिटेंसी है उसकी प्लानिंग को भी साथ साथ देखना है, और दे शुड बी ट्रीटेड एट द सेम लेवल. सो ये तो मैनेजमेंट की बातें होंगी. सो जस्ट एज बिजनेस प्लानिंग इजंट ऑलवेज आइडियल, कोर कॉम्पिटेंसी प्लानिंग isn't ideal either. So you can think of core competency planning as a spiral process. तो business planning में भी आप मुख्तलिफ steps लेके refinement करके initial stage से further improvement करते हैं. इसी तरह आपको core competency के लिए भी ज़रूरत है. बाज़ मिसाल के तौर पे बाज़ managers की नज़दीक ये ज़रूरी नहीं होगा कि उनको specialized database administrators की ज़रूरत हो, लेकिन as the business grows, as the servers continue to run for 24/7, as the data increases, the data size increases on those servers, as the need to take regular backups and other business continuity issues have to be handled, you need to have DBA expertise also. So, this is also a very important part. The next influencing factor is that you need to have a clear picture of the current state that you're operating in. पहला तो आपने विजन बनाया, बिजनेस नीड्स के साथ उसको समझाया, उसको एसोसिएट किया, लेकिन now the real work starts. विजन तो आप बहुत अच्छी बना सकते हैं. You can pick up visions from any visionary and see कि जी वो उन्होंने कैसे काम किया. But now the real hard work starts as to where you are, and then you need to take your organization, your group to where you want to go. So once you have a good picture of your desired future, जहाँ आप जाना चाहते हैं, there are 3 key methods by which to gain a similar understanding of your current state. इसमें जो factors हैं, जो कि mileage improving activities हैं, जो tasks हैं, वो अब मैं आपके साथ share करता हूँ. Number 1 is understand your software development costs and their leverage points. So again, a very business oriented activity. You have to understand कि आपकी जो software development के costs हैं वो क्या हैं और उनके leverage points क्या हैं. The software process improvement investment model gives you a simple way to model major developments, to look at the costs of rework and to look at the knowledge रिकवरी कॉस्ट्स. तो इस तरह बहुत सारी आपको जो कॉस्ट्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. इसकी क्या फ़ायदा होता है? दिस हेल्प्स यू टू गिव योर मैनेजर और मैनेजमेंट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्ट साइड कि ये प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसकी दे वुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ software development or software developers work. Number 2, it will help you in changing people's opinions and perceptions relative to the importance of proposed investments. जो आपने improvements करनी है उसके और investments करनी है in processes, उसके बारे में लोगों की जो opinions हैं वो change करने में आपको मदद मिलेगी जबकि आपको cost के बारे में पता होगा. And it sets realistic expectations for proposed cost savings. ये नहीं होगा कि आप
अगर आपको ये बातें नहीं पता, आपको कॉस्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि जी हम अगर सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट करें तो इसके नतीजे में विल मेक सॉफ्टवेयर सो चीप दैट इट विल बी एबल टू मेक huge amounts of profits. This is an unrealistic cost saving, yeah, unrealistic expectation with respect to the profits that will be returned. तो ROI की जो expectations हैं वो भी realistic रहनी चाहिए. So you get an even better picture of the improvement opportunities when you analyze your major defect sources. Defect sources ही in fact आपकी इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करते हैं, इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को वो एक लिहाज से फोर्स कर रहे होते हैं कि हम इनिशिएट की जानी चाहिए. सो दिस इंफॉर्मेशन स्पेशली पावरफुल व्हेन यू कंबाइन इट विद द इन्वेस्टमेंट मॉडल information. It further clarifies costs. It gives you an excellent way to evaluate the potential of proposed improvements and gives you an effective way to track and communicate successful changes that you are going to make. The next factor or mileage improvement activity is shown next. Understand your organization's readiness for change. Now this is very important. One way to get a clear picture of your current state is to do an assessment that is well matched to your organization's needs. आपको अगर अपनी organization की readiness for change का ही नहीं पता, तो how can you institute changes? Pick an assessment approach that matches your business needs, level of sponsorship, scope of needed change, and your best guess of organization readiness. And that will result in the assessments that tells us कि जी हमारी जो current weaknesses क्या हैं और current strengths क्या हैं और opportunities क्या हैं. And that is what an assessment gives you. Assessment also motivates people to change, and it develops models on how to approach assessments. It is not easy to get a clear picture of your organization of readiness for a change. Assessments help us in this regard. तो हमें ये पता ही नहीं होगा कि change के लिए लोग तैयार भी हैं कि नहीं. मिसाल के तौर पे लोग, some of the people at least, will rather leave the company than change the way they do their software development. तो ये अगर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो then you're obviously in serious trouble. But the point is that जो inertia है, जो एक resistance to change है, that is a real factor, and you need to get a pretty good idea as to what that is in your organization and how willing people are to change. इसी तरह जो एक और major factor है in helping us to institute the software process improvement activities and initiate this process improvement programs in your organization is to minimize potential roadblocks. क्योंकि जहाँ पे resistance होगी, वहाँ they will try to minimize your efforts and would try to create roadblocks. जैसा कि हम शुरू में भी एक जो visual मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें हमारे software process improvement की journey describe की थी, उसमें भी challenges और इनका issues और roadblocks का जिक्र किया गया था. उनके बगैर आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते. They're always there. So, but you have to overcome them. Process improvement projects face complex sociological issues which are not normally faced in product projects. Because product के साथ एक excitement होती है. People would want to develop products. Their salaries are coming from the success of those projects and success of those products. So you have to be extra careful in launching process improvement initiatives. So extra analysis and planning can go a long way in helping to avoid
these roadblocks. तो एक और improving mileage number 4 जो है वो अब हम discuss करते हैं. So you have to understand your business and organizational forces. What are your business and organization forces? A force field analysis of management commitment gives you the best snapshot of potential varying mileage. You need to know कि आपकी जो management है, आपकी जो business और उसके आपकी organization में जो मुख्तलिफ forces operate कर रही हैं, and some of them are not very obvious. They play a very important role in success or failure of any project. तो उन forces को अगर if they're working in your direction, if they support process improvement activities, then you need to get them on your side and sort of drive the entire organization towards the process improvement activities. लेकिन अगर वो आपके खिलाफ काम कर रही हैं, then you have to mitigate those forces. So the force field analysis helps you to steer towards the simple risk minimizing strategies. अगर आप determine करते हैं कि ये forces आपके खिलाफ हैं, then you have to develop those risk minimizing strategies. और अगर ये आपके हक में काम कर रही हैं, तो obviously you would love that and you want to proceed in that direction. Another process improvement activity is shown next. So another factor is understand the origins of resistance to change. Many people develop reasonable beliefs based on their experiences. Some people also develop unreasonable beliefs, but let's not consider them now. So if you propose changes and those proposed changes are dissimilar enough to their past experiences that when they try to draw similarities, they won't reflect probable outcomes. So I think that if we adopt this new approach, if we adopt the changes which are recommended, we will not be able to get the results we want. And they would come up with scientific or I would say pseudo-scientific conclusions or arguments that they have on their side. So you have to counter them. And one way to avoid being judgmental about such derived beliefs is to think that the resistance is a standard reason not to adopt new things or not to do the proposed things. And so you need to minimize the resistance, and you need to know the origins of resistance also. So this can help you to open your viewpoint, so you can think about both your and their ladders of inference. वो कहाँ से ये inferences draw कर रहे हैं, आप कहाँ से ये inferences draw कर रहे हैं, and as an analyst you should be able to compare them. So resulting discussions will help you to create ways to remove those roadblocks. So जहाँ से वो roadblock आ रहा है उसकी origin तक आप जानने की कोशिश करें. Why that person is creating a problem or raising an issue or laying down a difficulty, a roadblock in the success of the project, उसके ये देखें कि वो क्यों उसको ऐसी मुश्किल पड़ रही है. Another important factor or mileage improvement activity that you need to do is, as shown in the slide, is strengthen plans. So more complex projects require better planning and better risk management, and even the simplest process improvements aren't very easy. So, all the process improvement activities are focused on planning. You cannot just arbitrarily do things. You have to plan these things. You have to ensure that the plan is developed with the help of or as a result of various iterations and refinements. So you need to continue to strengthen plans. When you say strengthen, it obviously means, intuitively means that it's not the first cut plan. It has gone through several refinements, and you've talked to different people, and you've looked at the experience reports, and you've
developed this with the help of literature reports that are available to you. So that's you especially need to plan and motivate people and to optimize their working environment. So process improvements को initiate करने के लिए आपको planning की ज़रूरत है. You should use one of the models available to initiate process improvement activities. और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ सकती हैं कि जो inexperienced team members हैं उन्होंने उन activities पे पहले काम नहीं किया होता. So this is an added risk which requires that as a minimal the process improvement plan should be written down. Obviously, when you're talking about process improvements, it requires formal planning, and that planning has to be documented in the process improvement plan, which is exactly required to communicate solutions to the team members. And when you communicate solutions to team members, to project management and customers also, it enables you to maximize success. So you will need to be effectively describing your project and its benefit to all these stakeholders, and you will do that often. A good approach would be to imagine its completion early and create a storyboard that envisions how that will appear. So there are a number of other ways you can use communication. So this is a powerful way to describe your project clearly as part of the organization's future desired state. Another useful tool that ensures strong ties to business goals is the goal question metric model, or goal question metric, or GQM process. That process ties your goals with the metrics that you're going to collect, this approach is easily accepted because it has numbers, and so communication becomes better by the use of such approaches or such models. Another mileage improving factor is discussed next. So you need to set reasonable expectations for results. The first part of setting reasonable improvement expectation is to calculate cost savings, and this we have talked about. This is a double-edged sword. If you don't do these estimates, or if the way you communicate them makes seem low, your project is unlikely to be approved. But on the other hand, you cannot exaggerate the numbers, as I've talked about earlier. You will probably face difficulty in reality. So if estimates are too high, you will run into difficulty. Similarly, you need to be sure that you include and you estimate the cost of the process improvement activities itself to be allocated somewhere, because that money is also coming from somewhere. And if there is crunch time on the organization, and then it's quite possible that the process improvement activities will be discarded and the project will be cancelled. So if your estimates are high, then you're allowed to finish, but your project may still be considered a failure. So doing cost-saving analysis early in your planning forces you to document assumptions. This analysis enables you to make your intermediate steps in improvement gains clearer, and you have to be very honest about it. This is not a game. It's not. Objective of process improvement is to improve quality of products and services and to improve the productivity rates of the organization, staff that they're working in an organization. It's not purpose to institute or to institute unnecessary roadblocks in the way software is developed. So when you present your numbers, cost numbers, by performing a cost-saving analysis, they will generally be both believable and reasonable and high enough to require both technical as well as strategic thinking and assessment as to where the organization wants to go with respect to process improvement. So the next factor that influences or that forces us to vary
success in process improvement activities is discussed next. And that is, you have to frame expectations for different audiences. So when you're dealing with the process improvement activities, it's not just the development staff, it's not just the management, but in fact the entire organization is going to be affected one way or the other. Even if your process improvement project is just for one project or one part of the company, it will be taken with sarcasm, and you need to convey the results and frame expectations from different points of view, from the management's point of view, from the developer's point of view, from the stakeholders' point of view, and other influencers, for example, customers. What do they expect to find when they do business with you, with your improved processes and so forth? So, you have to be very careful, and you have to analyze this from different perspectives, and to look at the problem, and to look at the solution, and the expectations and the objectives in a multifaceted fashion. You cannot just look at from a technical point of view that the developers are interested in doing it, or the management is interested in doing a process improvement project, but they're not really sure as to what the end result would be. So it brings us back to the starting point, where we need to clearly state what our future desired state is, and why do we want to go there, and so have to bring the vision in as the starting point, and then lay the groundwork for how we want to go there. तो बात यह है कि जब आप आइडियाज़ और विजन और बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आपका व्यू पॉइंट और पर्सपेक्टिव जो है वो बाज़ दफ़ा हर चीज़ को नहीं समझ रहा होता. एक चीज़ जो डेवलपर्स को समझ आ रही है, वो ज़रूरी नहीं कि मैनेजमेंट को भी समझ आ रही है, ज़रूरी नहीं कि फंक्शनल मैनेजमेंट को भी समझ आ रही है, ये ज़रूरी नहीं कि स्टेक होल्डर्स को भी बात समझ आ रही है, और अल्टीमेटली कस्टमर्स उससे एग्री कर रहे हैं कि नहीं. और अगर कस्टमर्स एग्री नहीं कर रहे, तो डू वी वांट टू कंटिन्यू विद द प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज़, और वी वांट टू अबैंडन देम, और वी होप कि विल फाइंड न्यू कस्टमर्स. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं. सो दैट्स वाई we have to link all our process improvement activities, initiatives and programs with our business objectives. तो core competency के साथ इसको link करना पड़ेगा, business planning के साथ इन चीज़ों को link करना पड़ेगा. तो unless you do that, and you have to frame expectation for different audiences, उनके cost के activities होती हैं. बाज़ लोगों जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने metrics इकट्ठे करने हैं, जिन्होंने process को implement करना है, उनकी activities all है. फिर management कहते हैं जी हमें इसके लिए इतने लोग आपने required हैं to initiate this program and to implement this program. उसमें उनकी overhead involved है. You have to buy new tools, you have to maybe upgrade office environment, and maybe bring in ergonomic furniture and things like that. तो हर चीज़ को आपने देखना है, तब आपकी जो process का जो project है वो successful हो सकते हैं. So the last major factor that we're going to talk about, process improvement factors which influence and vary our mileage or success rate, is reinforce success with measured results. So the last point that we're going to talk about in detail is the use of metrics, and so you have to have a measurement program. So there is nothing like quantified intermediate results to eliminate doubts and solidify support. By imagining how your results will look during your initial planning or storyboarding, you will ensure that you collect the right data to report success confidently. लेकिन metrics collection or measurement programs के build करना itself is a very complex task, and you are familiar with it. इसमें सबसे पहले important है कि आपकी जिन metrics को आप इकट्ठा करना चाहते हैं, collect करना चाहते हैं, उनको goals के साथ associate करें, उनके improvement opportunities के साथ associate करें, data को collect करें. फिर then you have to use that data with strategic sensitivity, और उन जो results आपके पास आएंगे, जो data faithfully आपने collect किया होगा, उसके basis के ऊपर फिर आप decision making करें. So this
entire set of activities is fairly complex. तो सर हमने 10 माइलेज इम्प्रूविंग फैक्टर्स आज डिस्कस किए हैं. इसमें ह्यूमन रिसोर्स का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें ट्रेनिंग का एक फैक्टर है, इसमें कॉर्पोरेट कल्चर का एक फैक्टर है, इसमें ओपननेस एंड फ्री कम्युनिकेशन का एक फैक्टर है. ऑल्दो वी हैव टच्ड अपॉन दैट लिटिल बिट, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. फिर कंपेटिटिवनेस है, फिर जिस मुल्क के अंदर आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, लॉज हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर फैक्टर्स हैं. सो नंबर ऑफ थिंग्स विच इन्फ्लुएंस your process improvement activities and your process improvement programs, and also your process improvement future. So the spiral model emphasizes looking toward a future desired state. As we continue to mature, software engineering improvement techniques will get even better, and we will understand our sociology better. And once we understand our sociology better, we will be able to work on the people issues better. We will be able to use the technology better. We will be able to use the different process improvement activities in a much better fashion. But the most important thing is that we need to link our process improvement activities, initiatives, programs. And by the way, measurement programs are obviously part of your process improvement activities with the business goals. You need to get your people on board. You need to have open and free communication. You need to have cost-benefit analysis. And so all of these factors influence the success rate, influence in improving the mileage that you get out of your process improvement programs. So that brings to the end this discussion, and I take leave of you. Thank you very much.